Bismillahirrahmanirrahim. Good evening, ladies and gentlemen. How are you today? Fine, thanks, and you, sir? Just fine. Today we will inshallah do another tense, that is past indefinite tense. What tense we will do today? Past indefinite tense. Past indefinite tense. And what's the second name of past indefinite tense? Simple past tense. Some people call it simple past tense and some people call it past indefinite tense. Both are a correct name. And what does its Urdu meaning? Pehli mazi mutlaq. As I told you last night that indefinite means mutlaq. So but here it is past indefinite. So mazi mutlaq. Our present indefinite mean pehli hal mutlaq. So past indefinite tense mean पहली माजी मुतलक पास्ट के बारे में है. Dear viewers and listener, when we are talking so about our 40% discussion is about the past. तकरीबन जब हम बातें करते हैं तो 40% बातें हम माजी के बारे में करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई रोट अ लेटर, आई वेंट टू पिशावर, आई प्लेड क्रिकेट, सलीम केम टू आवर हाउस, Khalid took tea, Arshad recited the Holy Quran. So we are talking about the past. 40% discussion is about usually the past. Yeah. Today we will talk about the past tense. What's the identification of the past indefinite tense? Yeah, alif, shutiya, ya badiya. These are the identification of the past indefinite tense. Mean when we translate the sentences into Urdu, at the end of Urdu sentences usually alif, shutiya, ya badiya come. For example, wo school gaya. So in gaya, if we look at gaya, so in gaya usually at the end alif is there. Similarly, Aisha ne khat likhi. लिखी में चुटिया we use it for feminine or for female or gender. and हमने क्रिकेट खेले, खेले ये जमा के लिए आता है. So these are the Urdu identification of this tense. So I hope you will have learned the identification of this tense, that usually at the end of the Urdu sentences alif, chutiya ya badiya come in these sentences. So far the use of this tense is concerned, so first of all we use this tense for what kind of activities? Activities started and ended in past at a specific time. Good. ऐसे एक सरगर्मियाँ या ऐसे काम जो शुरू भी हो जाए और ख़त्म भी हो जाए माजी में एक ख़ास वक्त में. इस टेंस में एक बात है कि वक्त का तयन आम तौर पर इस टेंस में होता है. फॉर एग्जांपल, बिलाल केम टू कराची लास्ट मंथ. खालिद वेंट टू तेमरगरा यस्टरडे. यस्टरडे मीन कल तेमरगरा गया. लास्ट मंथ मीन गुज़श्ता महीने वो कराची गया. सो द फर्स्ट यूज इज़ दैट वी यूज़ दिस टेंस फॉर such action which begin in the past and which ended in the past, but the time is known. Then inshallah, dear viewers, we will discuss present perfect tense. So the difference between present perfect tense and present past indefinite tense is that in present perfect tense there is no specification of the time. Time का तायुन वहाँ नहीं होता है. But in this tense usually the specification of the time is there. One use of this tense is that. What's the second use of this tense? Activity completed in past and the time is understood. Sometimes we don't use the time, but ऐसे activities, ऐसे सरगर्मियाँ या ऐसे कामें completed जो मुकम्मल हो चुके हो in the past and the time is understood, time मालूम हो, जो मुतकल्लिम हो और सामे हो, दोनों को पता है. फॉर एग्जांपल, if I say we won the match, हमने मैच जीता, तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि मैच कल था या परसों था, वो तो मुकर्रर था. Already it is understood. So we won the match yesterday, then we don't use. Right? Similarly, Ahmad went to Karachi.
Went to Karachi, so you and I know that he went to Karachi either today or yesterday or the day before yesterday, parsu ya tarsu, right? हो गया. So the time is already understood, and we don't mention the time in such a sentence. We don't mention the time as well in such sentence. The third use of this tense is we use this tense for past habit with the adverb always. Adverb या पहले मुताल्लिक़ लफ्ज़ जब always इस्तेमाल हो जाए तो ये माजी के आदत के लिए भी इस्तेमाल होती है. For example, we can say that Ahmad always helped the poor. अहमद ने हमेशा गरीबों की मदद किया जब वो ज़िंदा था, जब वो मालदार था. खालिद always played cricket. वो हमेशा क्रिकेट खेलता था जब वो नौजवान था और उनके क्रिकेट का दौर था. So with the verb always, the adverb always when it is there, so it shows past habit. ये माजी की आदत को भी ज़ाहिर करती है. And the fourth use is that, what's the fourth use, dear viewers? Americans, this tense a lot for past action. Good. American, जो American English है, so American use this tense a lot. वो इस tense को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. American use this tense a lot for past actions, माजी के कामों के लिए. For what? माजी के कामों के लिए इस टेंस को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. जब हम अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं तो आम तौर पर हम कहते हैं मैंने चाय पिया, आई टुक टी. बट अगर हम ब्रिटन इंग्लिश बोलते हैं, बरतानिया वाला इंग्लिश, तो वो ज़्यादातर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं. इंशाल्लाह वी विल डिस्कस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. दे से आई हैव टेकन द टी, आई हैव टेकन द टी, एंड अमेरिकन से आई टुक टी. So that is one use, is that American use past indefinite tense for recently completed action mostly. Similarly, American say I played cricket, मैंने क्रिकेट खेला. And the Britain say, बरतानिया वाला English, I have played cricket. So that is one difference is that. So I hope you will have learned all the four tenses of the past indefinite tense. But as you know it is past, so it is clear that the activity begin and finish in the past, not continue right now. कोई एक्टिविटी माजी में शुरू भी हुआ और ख़त्म भी हुआ है, अभी वो एक्टिविटी जारी नहीं है, because the tense is past tense. Yeah. Now, dear viewers, let's come to the structure, that how can we will make the sentences in this tense. So the structure or sakht, positive structure is that first of all we use what form? Subject. First of all we use subject. What does subject mean? फाइल, काम करने वाला. या सब्जेक्ट आर यूजुअली अ नाउन और अ प्रोनाउन, या तो इसम होते हैं या इसमें ज़मीर होते हैं. आफ्टर देन वी यूज विच फॉर्म ऑफ वर्ब? गुड. व्हेन वी राइट इन दिस लैंग्वेज प्रोग्राम वी टू मीन वर्ब सेकंड फॉर्म, बट एक्चुअली इट इज कॉल्ड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. Past form of the verb. And after that we will use rest of the sentence, बाकीमानदा जुमला जो भी हो. Usually you know, dear viewers and listener, that verbs has three form. They are, the first one is the base form, or the sometime it is also called lexical form, mean dictionary wala form, or base form or first form of the verb. It is also called first form of the verb. The second one is past form of the verb, and it is also called second form of the verb. In simple English or in Pakistani English we use it second form. And the third form is actually past participle form. What form? Past participle, but we call it third form as well. In our day-to-day life we call it third form as well. Then dear viewers and listeners, there are two type of verbs. There are so many division of verb. Inshallah we will discuss that in part of speech, but here we should just learn that there are two type of verb. One is regular verb. One is what verb? Regular verb. वो verb जो regular तरीके से उनके second और third form बनते हैं. And the other is irregular verb. What is the other one? Irregular verb. As this is not our topic today, so we will inshallah explain it another day, but you should just learn that regular verb are
are those verbs which make the past and past participle by adding d or ed. या तो हम ed इसके साथ शामिल करते हैं या d शामिल करते हैं और हम इसके पास्ट फॉर्म बनाते हैं। इसमें ये पहला सालिम हालत होता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। सो अगर हम देख लें प्ले यहाँ भी है और यहाँ भी है और प्लेड सारे सूरत इसमें मौजूद है। प्ले मीन खेलना, खेलना, और प्लेड खेला, खेला मीन माजी के लिए है। एंड रिसाइट तिलावत करना और रिसाइटेड तिलावत कुरान मजीद या तिलावत किया या मीठे आवाज़ में कोई नात नज़म वगैरह पढ़ा। सिमिलरली वॉच देखना और वॉच्ड देखा। सिमिलरली पेक्स ठीक करना और फेक्स्ड ठीक किया, ठीक किया। All these are regular verb because the second and third form make by d or ed. Okay, and the second division of verb is irregular verb. Irregular verb are formed on different way. There are 5 different way to form the irregular verb. 5 मुख्तलिफ तरीक़े हैं जिससे हम irregular verb बनाते हैं। The first one is, dear viewers and listener, all the 3 form are different. All the 3 form are different. या go जाना, went गया, went mean गया, and gone is the third form. Similarly buy खरीदना और bought खरीदा, खरीदा आखिर में अलिफ आ गया। बाई, बॉट, बॉट। आपके जहन में अब ये भी आ जाएगा कि ये रेगुलर क्यों नहीं है। सेकंड और थर्ड फॉर्म तो एक जैसा है, लेकिन इसलिए रेगुलर नहीं है कि इसमें ये पहली हालत सालिम नहीं है। यहाँ बी है, यहाँ तो ठीक है बी है, यहाँ यू है, यहाँ ओ आया है, यहाँ वाई है, यहाँ यू जी एच कुछ और आए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देख लें तो पहली सालिम हालत इसमें मौजूद है, प्ले एंड द होल प्ले इज प्रेजेंट। रिसाइट and recite is present, only d is added. Similarly watch and watched, only the watch is there, the addition of ch has come. So that's why they are regular verb. It is irregular although the second and third form are the same, but the first form is not completely there in it. That's why it is called irregular verb. The third one is the first and the third form are the same and the middle one is different. Come आना, came आया, and come third form भी है। Inshallah third form we will discuss later on. In all the perfect tenses and passive voice we use the third form of the verb. And the next one, the fourth one is all the 3 form are the same. All the 3 form are the same. For example, read पढ़ना और read पढ़ा. You should keep it in mind that the pronunciation of this is different. Read, read, read. The second verb pronunciation is just like read. The pronunciation is just like read. Read, read, read. Right? So when we are making the positive sentences of this tense, so we will use verb second form. For example, Bilal ने cricket खेला. Good. Bilal played cricket yesterday. Usually we commit this mistake. We say Bilal played cricket yesterday. So that is wrong. We should use second form of verb because the tense is past tense. Ahmad ने कुरान मजीद की तिलावत किया. Good. Ahmad recited the Holy Quran. We usually commit that mistake. It's my experience, dear viewers and listener, that we say Ahmad recite the Holy Quran. और हमारा मतलब ये होता है कि अहमद ने कुरान मजीद की तिलावत किया। हम माजी की बात करते हैं लेकिन इस ed का इस्तेमाल नहीं करते हैं, which is a common mistake. So after watching this video, you should try to use the past tense for past action, not the present tense for past action. Then actually the listener or the audience don't understand our English. If we say to a person that I play cricket, तो इसका मतलब ये है कि आदतन मैं क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मेरा मतलब ये है कि मैंने क्रिकेट किया और मैं उसको कहता हूँ कि आई प्ले क्रिकेट, तो फिर वो तो नहीं समझ जाएगा कि आपका मतलब क्या है. So when you are talking about past, you should use the past form of the verb. इसी तरह हमने मैच देखा,
We watched. गुड, वी वॉच्ड द मैच, हमने मैच देखा, वी वॉच्ड द मैच। मैकेनिक्स ने, यानी बहुत से मैकेनिक्स थे, उन्होंने सीलिंग फैन को ठीक किया। या द मैकेनिक्स फिक्स्ड द सीलिंग फैन, उन्होंने सीलिंग फैन को ठीक किया। या सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट एक्शन वी शुड यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। सिमिलरली बिलाल और सलीम कराची गए, went to Peshawar, we shouldn't say go to Peshawar, we should say went to Peshawar। या खालिद ने चीनी खरीदा, good, Khalid bought the sugar। Dear viewers and listener, you should keep it in mind that with this one verb we can use in thousand and million of places, हज़ारों लाखों जगहों में हम एक वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल खालिद ने मोटर कार ख़रीदा, सो खालिद बॉट अ मोटर कार। खालिद ने एक घर ख़रीदा, खालिद बॉट अ होम। हमने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, सो वी बॉट द मोबाइल फ़ोन। बट जब ख़रीदने की बात हो और ख़रीदना माजी में हुआ हो, सो वी शुड यूज़ वर्ब पास्ट फॉर्म, जो भी चीज़ हो। बट वी विल यूज़ दिस वन, वी विल यूज़ दिस वर्ब। या इसी तरह मेरा वालिद मस्जिद से घर आया, came home from mosque, good, my father came home, मेरा वालिद घर आया। या सिमिलरली हमने लेवल 1 में यूनिट 4 पढ़े, वी रेड, गुड, 4 यूनिट्स इन लेवल 1। वी रीड न कहो, वी रेड, मतलब हमने पढ़े हैं, वो ख़त्म हो गए हैं इन लेवल 1, सो रेड। या आई रेड द न्यूज़पेपर टुडे, आज मैंने अखबार पढ़ा। सलीम रेड द नावल, सलीम ने वो जो नावल था वो पढ़ लिया। सो यू विल यूज़ वर्ब सेकंड फॉर्म। So I hope you will have learned the positive structure of this tense. Now we are going to make the negative and interrogative structure. And now we are going to discuss the negative structure of past indefinite tense. So when negative structure mean manfi jo saakhta, negative when there is denial or refusal in a sentence, that is called negative structure। मतलब जब जिसमें किसी काम के न करने के बारे में हो, माजी में कोई काम नहीं हुआ है, so for that we use a negative structure of this tense। So when we are talking about the negative structure, so what's the negative structure? डियर व्यूअर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट फाइल होता है, फिर क्या होता है? डिडंट, एंड डिडंट के बाद क्या होता है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वी मीन वर्ब एंड वन मीन फर्स्ट फॉर्म, एंड आफ्टर दैट रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये ज़रा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन समटाइम वी गेट कंफ्यूज इन इट दैट द एक्टिविटी इज अबाउट द पास्ट, सो व्हाई डू वी यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म? अगर एक्टिविटी माजी के बारे में है तो हम फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो द एक्सप्लेनेशन इज दैट डियर व्यूअर्स, दैट अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, we don't use past form of the verb or second form of the verb twice in one sentence। एक जुमले में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म 2 दफ़ा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये रूल्स रेगुलेशन है इंग्लिश ग्रामर की। सो एज यू नो द do is the present form, and what's the past form of do? Did, and the past participle form done. Do, did, done. I mean to say did is verb second form, that is first form of the verb, this is second form of the verb, and this one is third form of the verb. So did itself is verb second form. So when in a sentence did come, so due to did, then we use verb first form, because in one sentence we can't use verb second form or past form twice। एक जुमले में हम फेल की 2 सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, और डेड खुद ब खुद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। सो जो दूसरा होता है वो दूसरा हम फिर अहली ज़ुबान फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जब वो मनफी जुमले माजी के बारे में बनाते हैं। ये आप ऐसा तस्वुर करें कि डेड और वर्ब सेकंड फॉर्म एक दूसरे के तजाद है। ये ऐसी तरह नामुमकिन है जैसे एक जूते में 2 पाँव नहीं समा सकते हैं। तो इसी तरह एक जुमले में वर्ब की 2 सेकंड फॉर्म इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं।
सो दे आर ये दो एक दूसरे के ज़िद हैं. सो मनफी जुमले जब हम बनाते हैं तो डिडंट, मनफी के लिए हम डिडंट लगाएंगे, लेकिन डिडंट के बाद देन वी विल यूज़ वर्ब पास्ट फॉर्म. मिसाल के तौर पर खालिद ने क्रिकेट नहीं खेला, डिडंट प्ले क्रिकेट, देन वी विल यूज़ वर्ब पास्ट फॉर्म. खालिद ने क्रिकेट खेला, प्लेड क्रिकेट. मस्बत जुमले में तो वर्ब की सेकंड हालत होगी, लेकिन खालिद ने क्रिकेट नहीं खेला, खालिद डिडंट प्ले क्रिकेट. इसी तरह अहमद ने ख़त लिखा, अहमद रोट अ लेटर, मस्बत जुमला है, लेकिन अहमद ने ख़त नहीं लिखा, गुड, अहमद डिडंट राइट अ लेटर. डिड नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इट. डिड नॉट कंट्रैक्शन फॉर्म क्या है? didn't. Yeah, and mostly the native speaker don't use the t also too much. Didn't they also say. So didn't and didn't both are correct. You should try to use it, because in speaking the native speaker all the time use the contraction form. They don't use the full form or the strong form. They use the weak or contraction form. So इसी तरह हमने चाय नहीं पिया, We didn't take tea. Take tea वर्ब की पहली हालत हम लगाएंगे, We didn't take tea. तुमने लैंग्वेज मुकम्मल नहीं किया, You didn't complete the language or finish the language. वर्ब फर्स्ट फॉर्म. आफ्टर didn't you आप वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे. अहमद तेमरगरा नहीं गया, go to Temargara. Good, then you will write go. Ahmad didn't go to Temargara. प्रोफेसर साहिब ने क्लास नहीं पढ़ाया, the professor साहब didn't taught the class. Teach, taught. सलीम नहीं दौड़ा, रन, सलीम डिडंट रन, सलीम डिडंट रन. और सलीम ने यहाँ से रबात तक दौड़ा, रेन फ्राम रानी टू रबात, फ्राम रानी टू रबात. इसी तरह जब आप कहते हैं कि हमने हमारे टीम ने खाल टीम को शिकस्त दिया, आवर टीम बीट खाल टीम, या और हमारे टीम ने खाल के टीम को शिकस्त नहीं दिया, और टीम डिडंट बीट खाल टीम. सो बीटन, शिकस्त देना, शिकस्त दिया, और ये थर्ड फॉर्म है. So I think you will have understood this one, that when we are talking about the negative sentences of the past indefinite tense, तो we use didn't for मनफी. माजी के मनफी के लिए we use didn't, and after didn't we use verb first form. हम वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए पहली हालत इस्तेमाल करती है कि एक जुमले में अंग्रेज़ी क़वाइद व ज़वाबित की रूह से दो सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं. तो ये जो डू, डेड और डन, डेड सेकंड फॉर्म एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ, इसी वजह से दूसरी दफ़ा वर्ब पहली हालत इस्तेमाल होगी. एंड सिमिलरली डियर व्यूअर्स एंड लिसनर, व्हेन वी आर मेकिंग द इंटरोगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस, सो वी विल यूज़ दिस ऑक्सिलरी वर्ब डेड. ये इमदादी फेल डेड हम फ़िक्रे के शुरू में फिर लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करना है, एंड देन सब्जेक्ट, एंड देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. जब भी डेड आता है, ख्वाह मनफी के लिए या सवालिया के लिए, लेकिन जब भी डेड आता है तो फिर वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल होगी. फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने क्रिकेट खेला, गुड, डिड यू प्ले क्रिकेट. क्या बिलाल ने गाड़ी को ठीक किया, गुड, डेड बिलाल पिक्स द व्हीकल. व्हीकल मीन कोई भी गाड़ी है, फ्लाइंग कोच है, मोटर है, डेटसन है, जो भी हो. सो डेड बिलाल पिक्स द व्हीकल. डेड आया है, पिक्स्ड नहीं कहेंगे, अगरचे माजी के बारे में है, बट यू विल यूज़ वर्ब फर्स्ट फॉर्म. क्या खालिद ने खेतों में काम किया, walk in the field today, yesterday, last week, any past day or time you can mention. क्या हमने ग्रामर बुक लिखा, गुड, डिड वी राइट ग्रामर बुक. और प्रोफेसर नजीब साहब ने ग्रामर बुक लिखा,
प्रोफेसर नजीब साहब रोट द ग्रामर बुक, रोट उन्होंने लिखा। क्या सलीम ने क्लास लिया टेक द क्लास। तो ये भी याद रखे ब्रदर एंड सिस्टर कि क्वेश्चन डेड में है तो आंसर भी डेड में होगा। फॉर एग्जांपल डेड बिलाल प्ले क्रिकेट, तो अगर क्रिकेट खेला है तो येस ही डेड, येस ही डेड, जो भी सब्जेक्ट हो। और अगर नहीं खेला हो तो फिर क्या कहेंगे, नो प्लस सब्जेक्ट प्लस डेडेंट, नो के साथ डेडेंट लगाएंगे, नो ही डेडेंट, नो वी डेडेंट, नो दे डेडेंट, नो। ये तो इस तरह आसान भी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज और डू दो ऑक्सिलरी थे, यहाँ तो सिर्फ एक डेड है अगर नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तमाम नाउन या प्रोनाउन के लिए ओनली डेड इस्तेमाल होंगे। इसी तरह अगर हम कहें कि क्या खालिद ने बिलाल को शिकस्त दिया, गुड, डेड खालिद बीट बिलाल, सो येस ही डेड या नो ही डेडेंट, गुड। इसी तरह अगर हम कहें कि क्या तुमने वो किताबों को मेज़ पर रखा, good. Did you put the book on the table? On the table, you will try to adopt the question mark. Did you put the books on the table? So yes, we did. Yeah, no, we didn't. Did your mother recite the Holy Quran? Yes, she did. No, she didn't. Did your father offer the prayer? Yes, he did. No, he didn't. So in this way when you ask questions in ends you will use did in the beginning। लेकिन अगर मनफी सवालिया जुमला हो डियर व्यूअर तो आप didn't शुरू में लगाएंगे, didn't। क्या तुमने क्रिकेट नहीं खेला, तो क्या लगाएंगे, कैसे कहेंगे, क्या, गुड। didn't you play cricket, गुड, didn't you play cricket, so no I did, नो आई डिडेंट या येस आई डिड, नहीं मैंने नहीं खेला या हाँ मैंने खेला। क्या तुमने सब्ज़ी नहीं ख़रीदा, डिडेंट यू बाई द वेजिटेबल, येस आई डिड, हाँ मैंने तो ख़रीदा है, वो तो यहाँ पड़ी हुई है। या नो आई डिडेंट, मुझसे भूल गया, आई फॉरगॉट, मुझसे भूल गया, राइट। सिमिलरली क्या बिलाल ने चाय नहीं पिया, डिडेंट बिलाल टेक टी, सो येस ही डेड, हाँ उसने पिया, नो ही डिडेंट, नहीं उसने नहीं पिया। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में पुश्तों में ज़्यादातर इसी तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो ये मनफी सवालिया जुमले होते हैं। और इसके अलावा डियर व्यूअर्स देयर इज़ अ WH क्वेश्चन एज वेल। WH are information question as well. WH question are those which begin from WH word and they are what mean क्या, and where mean कहाँ, when mean कब, why mean क्यों, या which mean कौन सा। ये WH वर्ड है, 7 वर्ड्स है। So when we want to ask information question, so we use then this structure and then we use that dead small one, right? I hope you will learn it in this way as well. For example, तुमने क्यों क्रिकेट खेला, why did you play cricket, Why did you play cricket? To get exercise, ताकि वर्जिश करो। तुमने कहाँ क्रिकेट खेला, Where did you play cricket? So I played cricket in the school playground. तुमने कब क्रिकेट खेला, When did you play cricket? So I played cricket at 3 o'clock, at 4 o'clock, टाइम के बारे में है। Similarly, तुमने किसके साथ क्रिकेट खेला, Who did you play cricket? वो दूसरे कौन थे? So I played cricket with my class fellow. जब हम जवाब देते हैं तो जवाब वर्ब सेकंड फॉर्म में देंगे क्योंकि एक्टिविटी तो माजी के बारे में है, लेकिन कंप्लीट आंसर जब हम देते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो डेट की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह अगर हम किसी से ये पूछते हैं कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, या जब क्यों नहीं वाला पूछते हैं, फॉर एग्जांपल तुम तेमरगरा क्यों नहीं गया,
Good. Why didn't you go to Temargara? Why didn't you go to Temargara? I told you you should go to Temargara. मैंने तो आपको बताया था कि तेमरगरा जाओ. Why didn't you go to Temargara? Because I was sick. मैं बीमार था. Because I was busy. क्योंकि मैं मसरूफ था. Similarly, we can use that didn't question as well. So I hope, dear viewers and listener, you will have learned the past indefinite tense up to some extent. You should try to listen it again and again 3-4 times and try to use these sentences in positive, negative, question, WH question and WH negative question. You should use it 10 sentences about each structure. So I hope in this way you will get command upon this tense. The more you practice upon it, the more you will learn it. So try to listen the video again and again and try to subscribe it and share it with your near and dear one, so that they should also benefit from the English and should make their future a bright one. Thank you so much for watching the video.